गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल में और देखते रहिए यूट्यूब चैनल रंजीत कुमार। क्वेश्चन नंबर 7 दिल्ली के रिगार्डिंग में संबंध है कि पूछा जा रहा है कि कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिल्ली जियोग्राफी एंड वेदर कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट्स टू द एयर पोल्यूशन। आखिर एयर पोल्यूशन दिल्ली में इतना क्यों है, क्या कारण हो सकता है? ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून the prevalent direction of the wind is easterly. Once the monsoon withdraws, the predominant direction of the winds changes to the northwesterly. The fall in temperature also contribute to increase the pollution levels. साउथ वेस्ट मानसून का योगदान हो सकता है, जो कि एक तरह से कहीं ना कहीं प्रिवेलेंट डायरेक्शन ऑफ द विंड इज ईस्टर्ली। वंस द मानसून विड्रॉ, जब एक बार मानसून वापस जाता है, द प्रीडोमिनेंट डायरेक्शन ऑफ द विंड्स चेंज द नॉर्थ वेस्टली। द फॉल इन टेम्परेचर का गिरना ऑल्सो कंट्रीब्यूट, या डी इज द राइट आंसर। देखिए होता क्या है कि ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून द प्रिवेलेंट डायरेक्शन ऑफ द विंड इज ईस्टर्ली होता है। जो प्रिवेलेंट डायरेक्शन जो होता है वो ईस्टर्ली होता है। इसका मतलब है कि द विंड्स ट्रेवल फ्रॉम ओवर द बे ऑफ बंगाल से घुसा, कैरिंग moisturing and rainfall to this part of the country. Once the monsoon withdraw, जब एक बार मानसून वापस आता है, विड्रॉ आता है, however the predominant direction of the winds changes the north westerly, और इस बार जो wind का डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ वेस्टर्ली जाता है, नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाता है। These winds carry particulate matter जिसमें कि स्मॉग है, सूट है, from crop burning that in Punjab to the area above the Delhi, and then onward down Gangetic Basin. The fall in temperature also contributes to increase pollution levels. As it gets cooler, an inversion height, which is the layer beyond which pollutants cannot disperse into the upper atmosphere, comes down. What When that happens, the large concentration of the pollutants in the air hang closer to the surface and lead to worsening AQIs, एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी खराब हो जाता है। पॉइंट टू नोट हियर, डायरेक्शन ऑफ विंड इज नॉर्थ वेस्टर्ली इन समर, but it is very high temperature over Indo-Gangetic basin that ensure the pollutants that it brings does not hang low. Consider the following statement regarding total lunar eclipse. टोटल लूनर इक्लिप्स जो होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, total lunar eclipse occurs when the orbits of the earth, moon and sun align so that the moon is directly behind the earth relative to sun. During the total lunar eclipse, reddish appearances of the lunar surface is caused by the rays of sunlight around the outer edge of the eclipse shadow being filtered and reflected as it passes through the Earth's atmosphere. The total lunar eclipse is a rare event and occurs once in 10 to 12 years. Absolutely incorrect. टोटल जो लूनर इक्लिप्स होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, अकर्स व्हेन द अर्थ कास्ट इट्स शैडो कंप्लीटली, जब अर्थ जो है वो पूरी के पूरी मून को ढक लेता है। ठीक है, अर्थ कास्ट इट्स शैडो कंप्लीटली ओवर ए फुल मून, blocking reflection of all direct sunlight from the lunar or orb and dimming the color of moon to reddish hue. Hence the term is called blue moon. इसको blood moon कहते हैं, not blue moon. This is only possible when the orbits of earth, moon, sun align एक ही रेखा पे हो, so that the moon is directly behind अर्थ के ठीक पीछे होना चाहिए, रिलेटिव टू सन,
Otherwise, the moon passes above or below the Earth's shadow because its orbit around Earth is usually tilted relative to Earth's orbit about the Sun. The reddish appearances of lunar surface, the moon does not entirely disappear from the view. It is caused by rays of sunlight around the outer edge of the eclipse shadow umbra being filtered and refracted as it passes through the Earth atmosphere, bathing the moon indirectly in a dim copper glow. The degree of redness depends upon the atmospheric conditions that vary with the levels of air pollution, dust storm, wildfire storm, smoke, even volcanic ash. Total lunar eclipse occur on average about once every year and a half. हर आधे साल में तो हो ही जाता है according to NASA, but its interval varies. Consider the following statements. Reduction in mortality always lead to the rising population. Total fertility rate is the number of the babies an average woman bears over her lifetime. Population can keep growing even with total fertility rates falling. Which of the above statement is correct? तो सही बात है कि रिडक्शन होने से मोर्टेलिटी हमेशा घटेगा, ऐसा कोई बढ़ेगा ही, ऐसा कोई जरूरी है? दो और तीन सही है. रिडक्शन इन मोर्टेलिटी नॉर्मली लीड्स टू राइजिंग पॉपुलेशन. नॉर्मली ये बात तो सही है कि अगर मोर्टेलिटी रेट गिर रहा है तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ेगा. ए ड्रॉप इन फर्टिलिटी, लेकिन इसका अपोजिट सोचिए, मोर्टेलिटी रेट ही नहीं बल्कि अदर भी चीज तो भी है. ए ड्रॉप इन फर्टिलिटी ऑन द अदर हैंड स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ. अगर फर्टिलिटी ही घट गया तो फिर मृत्यु दर बढ़ने घटने से कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, वो तो मेंटेन कर देगा. अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन एब्सोल्यूट डिक्लाइन. द टोटल फर्टिलिटी रेट, दिस इज द नंबर ऑफ बेबीज एन एवरेज वुमन बियर्स ओवर हर लाइफ टाइम. अपनी जिंदगी के जो बच्चे पैदा के जो उम्र होते हैं उस काल से लेके, ठीक है, अपने पूरी जिंदगी में बच्चे कितना पैदा कर सकती है एक महिला, उसी को बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि अभी 2.1 है. कंसिडर रिप्लेसमेंट लेवल फॉर फर्टिलिटी. TFR अगर 2.1 है तो उसको क्या कहेंगे? रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी. सिंपली अंडरस्टूड समझ लीजिए, ए वुमन हैविंग 2 चिल्ड्रेन basically replace herself and her partner with 2 new lives. दो बच्चे पैदा करके माता पिता जो है अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं वास्तव में, अगर देखा जाए तो उन बच्चों के माध्यम से. सिंस ऑल इन्फेंट्स मे नॉट सर्वाइव टू रियलाइज देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, द रिप्लेसमेंट TFR इज टेकन एट स्लाइटली अबव 2. इसलिए रिप्लेसमेंट को हमेशा 2.1 थोड़ा सा ज़्यादा लिया था. 2 ले लेंगे तो ऐसा कोई जरूरी है कि दो बच्चा पैदा हुआ उनसे एक बच्चा मर गया तो क्या होगा, या दोनों मर गया तो क्या होगा? ठीक है, तो इट इंश्योर दैट ईच जनरेशन रिप्लेस इटसेल्फ. पॉपुलेशन कीप ग्रोइंग इवन विद द TFR फॉलोइंग. अगर TFR गिर भी रहा है तो भी पॉपुलेशन बढ़ता ही रहेगा. Degrowth requires TFR to remain below replacement levels for extended periods. The effort, yeah, the effects of that fewer children today becoming parents tomorrow. Fewer children today becoming parents of tomorrow and creating just as much or less may reflect only after a couple of generations. Consider the following statement regarding sinkholes. Sinkholes के बारे में पूछा जा रहा है. Sinkholes are depression formed in the ground when layers of Earth's surface start collapsing into caverns. They are formed in areas of karst या फिर terrains where the rock below the surface of Earth can be easily dissolved by groundwater.
They are formed due to natural processes or human activity. लेट्स सी, डी इज द राइट आंसर। ये सिंक होल जो बनता है वास्तव में कुछ है नहीं, डिप्रेशन है। depression form in the ground when layers of earth surface start collapsing into caverns. They can occur suddenly or without warning. सिंक होल का निर्माण कभी भी हो सकता है, अचानक हो सकता है, बिकॉज द लैंड अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ कैन स्टे इंटैक्ट फॉर a period of time until the spaces get too big. Sinkholes can be formed due to natural process or human activity. Typically, sinkholes form in area of karst terrain where the rock below the surface of the earth can be easily dissolved by the groundwater. ये जो सिंक होल बनने के कारण ही तो आपको पता है ना क्या हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। नीचे का जमीन ही गायब हो गया है पानी के धारा के कारण, अब पता ही नहीं चल रहा है। Essentially, this means that when rainwater seeps into the ground, the rock below the surface of the earth start dissolving. वो धीरे धीरे गलने लगता है। अंदर का जो रॉक है ना वो धीरे धीरे जब गलने लगेगा तो एक समय तो ऐसा आएगा अचानक धंस जाएगा शरीर, अचानक लैंडस्लाइड हो जाएगा या अचानक जो है जमीन फट जाएगा, leading to the creation of species. This process is slow and gradual and one can sometimes take hundreds or thousands of years लग सकता है, हो सकता है हजारों साल लग जाए। अब देख रहे हैं ना अभी क्या हो रहा है हमारे गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम्स। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड म्यूजियम। Consider the following statement regarding National Council of Science Museum (NCSM). It is the largest network of science centers या museum in the world functioning under a single administrative control. It is an autonomous body under the Ministry of Science and Technology. NCSM is implementing agency for the Science City scheme. Which are the correct? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है? ऑटोनोमस बॉडी है, सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है पूरा विश्व में। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको सुन के, बट ये सही है। एक और तीन, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के तहत। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज द डिपार्टमेंट या फिर नोडल एजेंसी। It is the largest network of science centers, museum in the world, functioning under a single administrative control. It is primarily engaged in spreading the culture of science in society, especially among students, with the motto of communicating science to empower people. Through its network of science and science center spread across India, NCSM is the implementing agency for Science City स्कीम। ये जो साइंस सिटी स्कीम है उसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो NCSM ही है, फॉर डेवलपिंग द न्यू साइंस सेंटर्स इन द कंट्री, नेशनल, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट, एवरीवेयर। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। सेवा के बारे में पूछा जा रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, दैट मीन्स सेवा। सेवा इज ए ट्रेड यूनियन that promotes the rights of low income independently employed female workers. It is affiliated by Union Ministry of Labor and Employment. Seva Banks was established to provide small loans to poor women, an initiative that was recognized by the International Labour Organization as a microfinance movement. चलिए, सही जवाब है बी, क्योंकि दूसरा गलती था, को पढ़ के कॉमन सेंस लगाना चाहिए था। सेवा द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन को सेटअप जो किया गया था वो एला भट्ट के द्वारा किया गया था
in 1972 में। सेवा वॉज बोर्न आउट ऑफ द टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। सेवा का जो निर्माण है वो वास्तव में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन टीएलए के द्वारा किया गया था, और फाउंडेड है इसका अनसुईया साराभाई एंड महात्मा गांधी इन 1920। बट इट कुड नॉट रजिस्टर एज ए ट्रेड अंटिल 1972, लेकिन इसको तब तक रजिस्टर नहीं किया गया 1972 तक, बिकॉज इट्स मेंबर डिड नॉट हैव एन एम्प्लॉयर and were thus not seen as workers. As early as in 1974, Seva Bank was established to provide small loans to the poor women, an initiative that was recognized by international level organization as a microfinance movement. Consider the following statement regarding cooperative societies in India. Cooperatives are enterprises which are owned, controlled, and run by its member. In India, the first cooperative society was emerged after independence. Majority of the cooperative societies in India are governed by laws in their respective states. जी नहीं, दो तो आप समझ रहे हैं कि दो तो गलत है, क्योंकि कोऑपरेटिव देश की आज़ादी से पहले भी था। By definition, cooperatives are organization formed at grassroots level by people to harness the power of the collective bargaining towards a common goal. History of the cooperative societies that backs to the pre-independence era. आज़ादी के पहले भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ करता था, ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद सब कुछ हो रहा है। इन रिस्पॉन्स टू द अग्रेरियन डिस्ट्रेस, कृषि से जुड़ी समस्याओं को लेकर, ओवरऑल जो कर्ज को लेकर, इन डेप्टनेस को लेकर कोऑपरेटिव तो था ही। इन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव डेयरीज, इन एग्रीकल्चर मतलब कृषि में कोऑपरेटिव डेयरीज, शुगर मिल, स्पाइनिंग मिल, etc are formed with the pooled resources of farmers who wish to process their produce. In the banking and finance, cooperative institutions are spread across rural and urban areas. There are also cooperative marketing societies in rural areas and cooperative housing societies in urban areas also. Okay, देखिए अमूल एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्जाम्पल है डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन आर इन ए स्टेट लिस्ट, यू नो अबाउट दैट कि कृषि और जो कॉपरेशन है वो दोनों स्टेट लिस्ट में आता है, विच मीन्स दैट स्टेट गवर्नमेंट्स कैन गवर्न देम. A majority of cooperative societies are governed by the laws in their respective states. Consider the following statement regarding Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा होता है उसके लिए 2005 में एक्ट बनाया गया था कानून। इस कानून के तहत क्या होता है? द एक्ट प्रोवाइड्स अ डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन लॉ। भारत के कानून में पहली बार डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है इसको परिभाषित किया गया इस एक्ट में। द एक्ट रिकॉग्नाइजेज डोमेस्टिक अब्यूज एज ए पनिशेबल ऑफेंस. It is both civil and criminal law, mean for protection orders and criminals enforcement, which of the correct? तो इसका सही जवाब है सी, 1 और 2, क्योंकि तीसरा गलत है, क्योंकि इसमें आपको बता दिया जाएगा कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इट इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन guaranteed under the Constitution who are the victims of violence of any kind occurring within the family or matters connected therewith or incidental thereto. It is the first significant attempt in India to recognize the domestic abuse as a punishable offense, to extend its provisions to those in live-in relationship, इसमें live-in relationship भी आता है, ठीक है, and to provide for emergency relief for the victims in addition to the legal recourse. The act provides a definition of domestic violence for the first time in Indian law. भारत में पहली बार डोमेस्टिक कानून को, डोमेस्टिक हिंसा क्या है उसको परिभाषित किया गया है, with this definition being broad and including not only
physical violence, but also other form of violence such as इमोशनल, वर्बल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक अब्यूज। किसी भी प्रकार से महिला को तंग किया ना तो सोच लेना 2005 का जो डोमेस्टिक वायलेंस है सीधा उठा के ले जाएगा। इट इज ए सिविल लॉ मीन प्राइमरली फॉर प्रोटेक्शन ऑर्डर रादर देन क्रिमिनल। ये क्रिमिनल इन्फोर्समेंट नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ सिविल लॉ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चलते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग येलो रस्ट डिजीज। इट इज ए फंगल डिजीज which turns the crop's leaves into the yellowish color. It is a disease of cool weather in the northern hills and northwestern plains zone. It does not affect the process of photosynthesis in the plants. प्रभावित तो करेगा ही। चलिए एक और दो सही है। येलो रस्ट या स्ट्रिप रस्ट is a fungal disease which attacks the leaves of the wheat crop by forming yellow strips and affects their photosynthesis that causes shriveling of the grain size। इससे अनाज का आकार छोटा हो जाता है। It is a disease of cool weather in the northern hills and northwestern plains zone। ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिल जो है ना उसमें बहुत प्रभावित करता है उस इलाके को, और ये खास करके गेहूं के लिए बहुत खतरनाक है येलो रस्ट। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। Suspension breaches depend on the balance of the force of compression and tension। India's longest single-lane motorable suspension bridge has been built in Gujarat। Which of the correct? गुजरात में कहाँ बना है? एक सही है। देखिए यही है सस्पेंशन ब्रिज। कौन सा काम करता है अब देख लीजिए। सस्पेंशन ब्रिज डिपेंड ऑन द बैलेंस ऑफ फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन। एक तरफ से कंप्रेशन, दूसरे तरफ टेंशन, इसके दोनों के बैलेंस पे काम करता है सस्पेंशन केबल्स। वर्टिकल सस्पेंडेड। देखिए डेड लोड, ये है एनकोरेज, लाइव लोड, वेट ऑफ द पीपल, और ब्रिज डेक। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज इज बिल्ट ओवर द टेहरी लेक। टेहरी जो झील है उसके ऊपर बनाया गया है, टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड में है। सस्पेंशन ब्रिज भारत का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल है, ठीक है, उत्तराखंड में है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC provides for the examination of the accused through which of the following tests: DNA profiling, blood and semen test, brain fingerprinting, नार्को एनालिसिस। केवल और केवल आपको पता होना चाहिए DNA टेस्ट अलाउडेड है नहीं। लेट्स सी। CRPC प्रोवाइड्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर विच इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या जांच किया जा सकता है? ब्लड, सीमेन और स्वैप्स द कॉज ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस के समय। आपका पसीना ले सकते हैं, आपका थूक ले सकता है, हेयर सैंपल एंड फिंगर नेल clippings using modern and scientific technique including DNA profiling and other necessary tests which could provide evidence as to commission of an offense। Similarly, Section 311A of the CRPC empowers a magistrate to direct any person, including accused person, to give a specimen signature or handwriting for the purpose of any investigation or proceeding। The only exceptions are the scientific technique, namely narcoanalysis, polygraphy, brain fingerprinting, which Supreme Court in Selby versus State of Karnataka 2010 held to be testimonial compulsion if conducted without consent, and thus prohibited under the Article 20 subclause 3 of the Constitution। These tests do not fall under the scope of expression such other tests in the explanation of Section 53 of the CRPC। तो 2010 में सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 20 सबक्लोज 3 को हवाला देते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि आप
नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफी और ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते सीआरपीसी में, ठीक है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीजेला इन्फेक्शन। सीगेला इन्फेक्शन या सीजेला इन्फेक्शन जो भी हो, सीजेला या साइगेला साइजेला इन्फेक्शन इज ए इंटेस्टिनल disease. It is caused by the family of fungi. The main sign of Shigella infection is diarrhea. अगर ये इंटेस्टिनल से है तो डायरिया हो सकता है और फंगी से हो सकता है। दैट मीन एक और तीन सही है। देखिए सीजेला इन्फेक्शन जो है ना एक इंटेस्टिनल डिजीज है जो कि कॉज बाय फैमिली ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जनित है, फंगी जनित नहीं है, इट्स बैक्टीरिया जनित। तो सीजेला इज ए इंटेस्टिनल, आंत से जुड़ा हुआ, पेट से जुड़ा हुआ कोई बीमारी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से फैलता है। द मेन साइन ऑफ सीजेला इन्फेक्शन, इसमें डायरिया हो जाएगा विच इज ऑफन ब्लडी भी होगा और वो डायरिया ब्लडी होगा। सीजेला कैन बी पास थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द बैक्टीरिया इन स्टूल, और ये थूक से भी फैलता है सीजेला। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सी रेडिएशन, can be used to disinfect the air and also in water treatment. UVA rays can penetrate the middle layer of human skin and cause aging of skin cells and damage the cell's DNA, which are the incorrect. Second one, all दोनों में से कोई नहीं करेक्ट है बल्कि दोनों सही है। यूवी रे केन, जो यूवी रे है वो पेंट्रेट कर सकता है आपका मिडिल लेयर ऑफ स्किन, ठीक है, मिडिल लेयर ऑफ स्किन या फिर डर्मिस, एंड कॉज एजिंग ऑफ स्किन सेल, इससे आपका स्किन जो होगा ना एज हो जाएगा, बुढ़ा जाएगा। इनडायरेक्ट डैमेज टू द सेल डीएनए। यूवीसी रेडिएशन फ्रॉम मेन टू मेन मेड, जो यूवीसी रेडिएशन है वो जो कि मनुष्य द्वारा बनाया गया, मेन मेड सोर्सेस हैज बीन नन टू काउज स्किन बर्न एंड आई इंजरीज। यूवीसी रेडिएशन वेवलेंथ जिसका 254 नैनोमीटर है, has been used for decades to disinfect the air in the hospitals, laboratories, and also in the water treatment. Consider the following statement regarding एलोप्सिया एरिटा। एलोप्सिया एरिटा से क्या संबंध है? एलोप्सिया एरिटा is a condition that causes sudden hair loss in patches. It mostly occurs in the people who have a family of history of autoimmune conditions such as diabetic, thyroid, एलोप्सिया ग्रेटा। डी इसमें से दोनों के दोनों सही है। एलोप्सिया एरिटा इज ए कंडीशन दैट कॉजेज सडन हेयर लॉस। देखिए एलोप्सिया एरिटा में अचानक बाल जो है ना गुच्छों में झड़ने लगता है। द कंडीशन इज डेवलप आफ्टर द इम्यून सिस्टम अटैक्स the hair follicles, resulting in hair loss which cannot be observed easily. Not just skull, sudden hair fall may also occur in the other parts of the body. दूसरे शरीर के अंगों से भी निकलने लगेगा। It can occur suddenly in any part of your body like the skull, beard, mustache, underarm, सब के सब बाल उड़ जाएंगे। It it may also develop slowly and occur again periodically and repeatedly after years between the instances. In this order, your one cell attacks the hair and cause them to shed, forming clear patches of hair loss. It mostly occurs in people who have family history of autoimmune condition, जैसे कि डायबिटिक, थायराइड, ऐसे लोगों के इम्यून सिस्टम में ये घुस जाता है। Consider the following statement regarding nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR). Nuclear magnetic resonance spectroscopy. Nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) technique is used for detecting the structure of organic compounds
Due to its electromagnetic radiation, it cannot be used to test the adulterants in food. ऐसा नहीं है, it could be incorrect B है. Nuclear magnetic resonance spectroscopic NMR is the most powerful technique for determining the structure of organic compounds. NMR techniques are used successfully in the various food systems for quality control and research. Consider the following statement regarding mucormyosis. Mucormyosis is a disease that is caused by a group of molds called mucormycetes that live throughout the environment, including soil and on planets or plants. Molds can get into sinus and deposit there, and they can get into the air spaces in head. Which are the correct? म्यूकोमायोसिस पहला तो सही है, दूसरा भी सही है. देखिए म्यूकोमायोसिस is a disease that is caused by a group of molds called mucomyocytes that live throughout the environment, including soil, on plants. Mucormyosis is seen throughout the world. It can be acquired, acquired in hospitals, most commonly by vulnerable transplant patients when the molds gets on hospital linens, travel through the ventilation systems, or transmitted on adhesives. They are family of fungus that gets into your sinuses and deposited there, and they can get into your air. They get into the air spaces in your head. Consider the following statements. X-ray X-ray fluorescence is commonly used to study the composition of material in a non-destructive manner. When the sun gives out solar flare, a large amount of X-ray radiation falls on the moon, triggering X-ray fluorescence. करेक्ट बताइए. When sun gives out of solar flare, a large amount of X-ray radiation fall on the moon, triggering X-ray fluorescence. सही है, बिल्कुल. Scientists from the Indian Space Research Organisation (ISRO) have mapped out the global distribution of sodium on the moon's surface. They use a class of instrument जैसे Chandrayaan-2 large area soft X-ray spectrometer carried by the second Indian moon mission Chandrayaan-2. This is the first effort to provide a global scale measurement of sodium on lunar surface using एक्सरे फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रा. तो समझ लीजिए भारत का द्वारा पहला प्रयास है जो पूरा मून का सोडियम के सतह का जानकारी आपको दे रहा है, और वो भी एक्सरे फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रा के मदद से. एक्सरे फ्लोरेसेंस is commonly used to study the composition of material in non-destructive manner. When the sun gives out solar flare, large amount of X-ray radiation fall on the moon, triggering X-ray fluorescence. Consider the following statement regarding tomato flu. Tomato flu affects children below 5 years of age. This flu is non-contagious in nature. This flu is self-limiting one, and there is no specific drug for this. It's a contagious. It's a B. It's a contagious. Tomato flu. What does it affect? Yeah, who does it affect? Tomato flu affects children below 5 years of age. 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उसको टोमेटो फ्लू. Symptoms also called tomato fever include rashes, skin irritation, dehydration. According to several reports, the flu can also cause tiredness, थकान होगा, joint pain होगा, stomach cramps होगा.
बेहोशी हो जाएगी, वोमिटिंग होगा, डायरिया, coughing, sneezing, running nose, high fever, body ache. In some cases, it may also change the color of the legs and hands. रंगों का बदलाव भी हो सकता है. This flu is self-limiting one, and there is no specific drug for this. कोई दवा नहीं है अब इसका. This means that the symptoms will resolve over time on their own if supportive care is given. Like other cases of flu, tomato flu या fever is also contagious. ये भी फैलता है. If someone is infected with this tomato flu, they need to be kept in isolation. उसको isolation में रखना होगा. As this could spread rapidly from one person to the another. दूसरे में भी फैल सकता है, छूने से भी हो सकता है. Indian remote sensing (IRS) satellites are mainly used for which of the following purpose? Mineral exploration, assessment of crop productivity, coastal and disaster management, telecommunication, locating. देखिए ध्यान से, आईरस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है? टेलीकम्युनिकेशन में कैसे? लोकेटिंग द अंडरग्राउंड रिसोर्सेस. तो एक दो तीन पाँच, चार तो होगा नहीं क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन तो बहुत अलग चीज़ हो गया. India's remote sensing program was developed with the idea of applying space technology for the benefits of humankind and development of the country. The program is to support national and sub-national economics in the area of agriculture, soil, water, resources, surface and ground, forestry and ecology, geology, mineral resources, cartography, rural and urban development, marine fisheries, watersheds, coastals, and disaster management. Consider the following statements. Hypertension or elevated blood pressure, a condition having systolic blood pressure level greater than or equal to 140 mmHg. Hypertension Controlling Initiative aims to eliminate the prevalence of high blood pressure by 2025. According to the National Family Health Survey, southern states have a lower prevalence of hypertension than the national average. इनकरेक्ट पूछ रहा है. जो हम लोग को हाइपरटेंशन की जानकारी है कि नहीं. हाइपरटेंशन में क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्या है? ठीक है. तो ब्लड प्रेशर कितना होता है जनरली? 80/120 होता है या. तो अगर वो बढ़ जाए तो इनकरेक्ट पूछा है, तो सी इज इनकरेक्ट. दो और तीन इनकरेक्ट है, एक सही है. हाइपरटेंशन इज डिफाइंड जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल ग्रेटर देन या इक्वल टू 140 mmHg या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 mmHg. जो ऊपर वाला होता है 120, वो 140 चल जाए. छोटा नीचे वाला जो होता है ब्लड प्रेशर वो 90 चल जाए. मतलब दोनों बढ़ जाए तो इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं. सिस्टोलिक डायस्टोलिक तो पढ़ा ही होगा. डायस्टोलिक, सिस्टोलिक. And taking antihypertensive medicine to lower his blood pressure. India has committed 25/25 गोल. 25/25 अभी कभी भी आए तो समझ लीजिएगा इसका एम जो है रिड्यूस करना है प्री मैच्योर मोर्टेलिटी ड्यू टू द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडीज बाय 25% बाय 2025. जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसका 25% गिरावट करना है 2025 तक. यही है 25/25 का मीनिंग. वन ऑफ द 9 वॉलेंट्री टारगेट्स जिसमें कि रिड्यूसिंग करना है प्रिवेलेंस हाई ब्लड प्रेशर बाय 25% बाय 2025. उनमें से एक ढाई ब्लड प्रेशर को भी कम करना है. ठीक है, 25% कम से कम. सदर्न स्टेट्स हैव हाई यर प्रिवेलेंस हाइपरटेंशन देन द नेशनल एवरेज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एडिशन ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. 21.3% वुमेन एंड 24% मेन एजेड अबव 15 हैव हाइपरटेंशन इन कंट्री. सोच लो, लगभग हर 100 में से 21 व्यक्ति, जिसमें महिला 21% महिला और 24% पुरुष जिसका उम्र 15 साल से ऊपर है, वो भारत में हाइपरटेंशन का शिकार है.
द प्रिवेलेंस इज द हाईएस्ट इन केरला 32.8% केरला में 32.8% मेन और 30.9% वुमेन हैव बीन डायग्नोस्ड विथ हाइपरटेंशन। चिंता का विषय है यार। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट फॉर मीजल्स the symptoms appear around 10 to 14 days after exposure to this virus. WHO recommends that measles vaccine must be given in combination like measles rubella or measles mumps rubella MMR. In India, the universal immunization programs covers vaccination for measles. चलिए लेट्स सी दो और तीन। एक और तीन सही है, दो गलत है यार। सिम्टम्स अपीयर 10 से 14 दिन के अंदर। एक बार अगर वायरस, चूंकि सिम्टम्स जो है वो 10 से 12 दिन के बाद दिखता है अगर वो वायरस के अफेक्टेड में आ गया तो। द मेन सिम्टम्स क्या होता है मीजल्स में? एक तो फीवर होगा, ड्राई कफ हो जाएगा, खोकी बहुत होगा, सूखा खोकी, और नाक बहेगा, सोर थ्रोट एंड रेस्ट। यंग चिल्ड्रेन हु डोंट रिसीव measles immunization here are at the highest risk of being exposed to measles and its complication including death। measles में मौत भी होता है। WHO recommends immunization for all children with the two dose of measles vaccine either alone or either in measles rubella MR और measles mumps rubella MMR कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं आप। As per the guidance of National Health Mission in India, measles vaccine is given under the Universal Immunization Program 9 to 12 months of age and second dose at 16 to 24 months of age. Which of the following mission have the objective to ensure the return of humans to moon? It's a at Artemis mission. Artemis mission program is a robotic and human moon exploration program led by United States National Aeronautics Space Administration along with the three partner agencies European Space Agency ESA, Japan Aerospace Exploration Agency JAXA, Canadian Space Agency CSA. Artemis program intends to re-establish a human presence on the moon for the first time, the Apollo 70 mission in 1972. Consider the following statements. In a narco-analysis test, a drug is injected into the body of the accused, which transports them to a hypotonic or sedated state in which their imagination is neutralized. Polygraph test is based on the assumption that psychological responses that are triggered when a person is lying are different from what they would be otherwise. दोनों के दोनों सही है लगता है। Both narco analysis tests and polygraphy tests have been proved scientifically to have 100% success rate। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए नार्को एनालिसिस में होता क्या है। एक ड्रग जिसको सोडियम पेंटोथल सोडियम पेंटोथोल जो है इंजेक्टेड कर दिया था बॉडी में। एक्यूज के बॉडी में पेंटोथल एक्यूज किया गया और ठूसा गया विच ट्रांसपोर्ट देम टू ए हाइपोटिक और सीडेटिव स्टेट। अब
आपको मतलब निद्रा अवस्था में पहुंचा देगा वो, नशा की अवस्था में, जहां पर आप इमेजिनेशन कर ही नहीं पाइएगा, चुपचाप रहिएगा, मतलब बहाना करने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। इन दिस हाइपो हिप्नोटोइक स्टेट, मतलब हिप्नोटोइक कहिए या हिप्नोटोसिक नहीं होते, हिप्नोटोइक स्टेट में चल जाने के बाद द accused is understood as being incapable of lying and is expected to divulge information that is true. Polygraphy test is based on the assumption that psychological responses that are triggered when a person is lying are different from what they would be otherwise. मतलब ये मान के चला जाता है कि कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे आपका दिमागी हालात जो है, आपका जो फिजिकल रिस्पॉन्स है, आपका जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो कुछ अलग होगा। ठीक है, जनरल स्थिति से छोड़कर। ए पोलीग्राफी टेस्ट डज नॉट इन्वॉल्व इंजेक्टिंग ड्रग इनटू दी बॉडी, इसमें कुछ बॉडी में ठूसा नहीं जाता है। ठीक है, रादर इंस्ट्रूमेंट लाइक कार्डियो कप्स या सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स आर अटैच्ड टू द सस्पेक्ट and the variables such as blood pressure, pulse rate, respiration, change in sweat gland activity, blood flow are measured as the question are put to them। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनके विभिन्न जो प्रक्रिया है, चाहे ब्लड प्रेशर का हो, हृदय का धड़कन हो, सांस लेने की दर हो, पसीना हो, ब्लड फ्लो हो, सब का उस पर रिकॉर्डिंग होता है। A numerical value is assigned to each response to the conclude whether the person is telling the truth, is deceiving, or uncertain. In recent decades, investigating agencies have sought to employ these tests in investigation, which are sometimes seen as being a softer alternative to torture or third degree to extract the truth from the suspect। सस्पेक्ट से डंटा मार मार के थर्ड डिग्री दे दे के जो प्रक्रिया चल रही थी भारत में, वो बहुत ही बेहतर नहीं माना जाता था, अमानवीय माना जाता था। तो ये तरीका ठीक है, पोलीग्राफी टेस्ट। However, neither method has been proven scientifically to have 100% success rate and remain content, contentious in the medical field। आपको बता देते हैं जजमेंट सेल्वी वर्सेस अदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 में एक केस था। सुप्रीम कोर्ट बेंच रूल दैट नो लाई डिटेक्टर टेस्ट शुड बी एडमिनिस्टर्ड एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेंट ऑफ द अक्यूज। जब तक अक्यूज ना चाहे तब तक किसी भी प्रकार का लाई डिटेक्टर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। It is said that the guidelines for the administration of polygraphy test on accused published by the National Human Rights Commission in 2000 must be strictly followed। The subject's consent should be recorded before a judicial magistrate, the court said। जो कुछ भी पूछा पूछी होगा सब कोर्ट के सामने होगा, आप एक बंद दरवाजे के अंदर पोलीग्राफी टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया किस किस का मेंबर है, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बेटर थन केस अलायंस, बेटर थन केस अलायंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी। ओआईसी का मेंबर भारत कहाँ से हो गया? केवल एक और दो। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत को मतलब बुलाया जाता है, पाकिस्तान चिड़चिड़ा जाता है इससे। बेस्ट ऑन यूनाइटेड नेशन, द बेटर थान केस अलायंस इज ए पार्टनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, companies, international organization, and that accelerates the transition from cash to responsible digital payments to help the achieve the sustainable development goals। अच्छा, कैश को डिजिटल पेमेंट्स में करने से सस्टेनेबल गोल की प्राप्ति होगी, इस उद्देश्य से थान बनाया गया। इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ अलायंस इन 2015 to digitize the payment to achieve the financial inclusion and to share success stories from PM Jan Dhan Yojana, the world's largest financial inclusion program।
India was conducted as a full member of SCO at 17th summit. Consider the following statement regarding Association of World Election Bodies. A wave एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के बारे में पूछा जा रहा है. इट इज द लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज वर्ल्ड वाइड. A wave's reasons is to foster efficiency and effectiveness in conducting free, fair, transparent, and participative election worldwide. The current mayor chairman of Association of the World Election Bodies from India. Yeah. Of course, इसलिए तो चर्चा में है. The Association of World Election Bodies (AWAVE) is the largest association of election management bodies worldwide. AWAVE was established on October 14, 2013. 2013 में इस्तेमाल हुआ था इसका संगठन का मतलब स्थापना इन सोंगदो साउथ कोरिया में. The permanent secretariat of AWAVE is located in at Seoul. इसका permanent secretariat कहाँ पर है? सचिवालय AWAVE का सियोल में है. AWAVE's vision is foster efficiency and effectiveness in conducting free, fair, transparent, and participative election worldwide. Its activities are guided by its mission to identify latest trends, challenges, developments in democratic electoral management and electoral process, and to facilitate appropriate exchange of experience, expertise among the members with the objective of strengthening the electoral democracy worldwide. The current chairman is Sushil Chandra from India. High burden to high impact. HBHI initiative sometime is new. What is the mean? High burden, high impact? It's a team. It's an initiative of WHO to reduce the malaria cases in high burden countries. WHO initiated high burden to high impact initiative in some of the high malaria burden countries, including India. Concerning the following regarding the East Asia Summit. East Asia Summit is a forum for strategic dialogue and cooperation on political, security, economic issues. East Asia Summit is an initiative of SASEC and it is based on premise of the centrality of ASEAN. India has been participating in East Asia Summit since its very inception. Correct की बात है तो B is the right answer. 1 and 3. About East Asia Summit. देखिए ईस्ट एशिया समिट एक इनिशिएटिव है आसियान का एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ सेंट्रलिटी ऑफ आसियान और ये सेंट्रलिटी ऑफ आसियान पे टिका हुआ है. Premises of centrality of ASEAN. The first summit was held in Kuala Lumpur, Malaysia. 2005 में इसका पहला मीटिंग हुआ था कोलालमपुर में. India has been participating in East Asia Summit since its very inception. मतलब 2005 से भारत इसका क्या है मतलब पार्टिसिपेटिंग कर रहा है. East Asia Summit has evolved as a forum for strategic dialogue and cooperation on political, security, economic issues of common regional concern and plays an important role in a regional architecture. There are 6 priority areas of regional cooperation within the framework of East Asia Summit. These are environment and energy, education, finance, global health issues, pandemic disease, natural disaster management, and ASEAN connectivity. India endorses regional collaboration in all 6 priorities areas. Consider the following statement regarding Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons (NPT) के बारे में पूछा जा रहा है. Prohibition of nuclear weapons for those nations that who are the party to it. The treaty prohibits
the development, testing, production, stockpiling, transfer, and use of nuclear weapons. Not all nuclear weapons nations have signed treaty. It is not a legally binding agreement. पहली बात तो सही बात है कि एक और दो और ये लीगली बाइंडिंग है, एक बार सिग्नेचर कर दिया तो बेटा फंस जाएगा इसमें, इसलिए भारत ने अभी तक तो इसमें सिग्नेचर ही नहीं किया है। देखिए, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ट्रीटी TPNW, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी इज द फर्स्ट legally binding international agreement comprehensively prohibit nuclear weapons with the ultimate goal being their total elimination. It was adopted 7 July 2017, opened for signature on 20 September 2070, enter into force 2021 से ये फोर्स में है। For those nations that are a party to it, the treaty prohibits the development, testing, production, stockpiling, stationing, transfer, use, and threat of the use of nuclear weapons, as well as the assistance and encouragement to the prohibited activities. For nuclear armed states joining the treaty, it provides for a time bound framework for negotiation leading to the verified and irreversible elimination of its nuclear weapons program. 69 नेशन ने वोट ही नहीं किया इस पे। Among all of the nuclear weapon states, all NATO member except Netherlands, झूठ मूठ का खाली झुंझुना बजाने के लिए इसको लाया था जब कुछ करना ही नहीं था। Consider the following statements. Climate Vulnerable Forum. Climate Vulnerable Forum is a global partnership of countries most at risk from climate impacts. Alliance of Small Island States (ASSOCIS) represents countries that are disproportionately disproportionately vulnerable to climate effects, particular sea level rise and coastal erosion. Umbrella group includes Africans, UN members, and that push for additional climate financing. Which are the correct? I think it's one and two. One, सबसे पहले तो अम्ब्रेला ग्रुप है क्या? द अलायंस ऑफ नॉन यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज, नॉन यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज अम्ब्रेला ग्रुप में है। नॉन यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, यूनाइटेड स्टेट। अफ्रीका ग्रुप, Africa's UN members will push for additional climate financing while arguing that expanding economics need fossil fuels to increase electric capacity. Climate Vulnerable Forum representing 58 countries जो कि बहुत ही खतरे से गुजर रहे हैं क्लाइमेट इफेक्ट के कारण, इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड मालदीव्स। तो ध्यान रहे, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, अलायंस नन बाय इट्स एक्रोनोम अकोसिस या ओसोसिस, small island states represent countries that are disproportionately vulnerable to the climate effects, particularly sea level rise होगा, coastal erosion होगा, तो सबसे ज़्यादा यही लोग तो प्रभावित होंगे। High Ambition Coalition chaired by the Marshall Island and with member including Costa Rica, United States, European Union, this group pushes for more progressive emission targets and climate policy. Consider the following statement regarding Singapore Convention on Mediation. This is the first UN treaty to be named after Singapore.
The convention will apply to the international commercial settlements agreement resulting from mediation. The convention also applies to the international settlement agreements that are concluded in the course of judicial proceedings and which are enforceable as a court judgment. Which of the above statement is correct? 1 and 2 is correct. United Nations on International Settlement Agreement resulting for mediation. United Nations Convention on International Settlement Agreements resulting from mediation. United Nations General Assembly adopted Convention on 2018 and it was opened for signature 2019 in Singapore. It is also known as Singapore Convention on Mediation and also the first UN treaty to be named after the Singapore. क्या इसके कुछ इंपॉर्टेंस बातें हैं की फीचर्स ऑफ दिस सिंगापुर कन्वेंशन एप्लीकेबिलिटी क्या है इसके लिए द कन्वेंशन बीन अप्लाई टू द इंटरनेशनल कमर्शियल सेटलमेंट agreements resulting from mediation. It's the commercial settlement agreement. Non-applicability. It will not apply to the international settlement agreements that are concluded in the course of judicial or arbitral proceeding and which are enforceable as a court judgment or arbitral award. It will not. It will also not apply to the settlement agreements concluded for personal, family, household purpose by one of the parties, as well as a settlement agreement relating to the family, inheritance, employment, law. It is उससे जुड़ा हुआ नहीं है. Consider the following statement regarding United Nations Commission on International Trade Law. UN UN Central UN United Nations Commission on International Trade Law. United Nations Commission on International Trade Law. UN Central is a subsidiary body of UN General Assembly. UNGA. It is mandates is to promote the progressive harmonization and unification of international trade law. करेक्ट की बात कुछ खोज रहा है मैंडेट होगा सोचो आप मैंडेट है मैंडेट है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ यूनिसेट्रल या यूएन सेट्रल एक सब्सिडरी बॉडी है यूएन जनरल असेंबली का जो कि जवाबदेही है किस चीज़ के लिए इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए ठीक ढंग से सब कुछ हो जाए इस्टेब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और ये यूएन सेंट्रल का स्थापना 1966 में यूएन जनरल असेंबली के द्वारा किया गया था यूएन सेंट्रल ऑफिशियल मैंडेट इज टू प्रमोट द प्रोग्रेसिव हार्मोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ वैश्विक जो व्यापार के जो नियम होते हैं उसको किस तरह से यूनिफाइड किया जाए through the convention, model laws, other instruments that address key area of commerce, from dispute resolution to the procurement and sale of goods. UN Central carries out its work at annual session held alternatively in New York City and Vienna, where it is headquartered. Vienna में इसका headquarter है, न्यूयॉर्क में भी इसका headquarter है. Consider the following statement regarding G20 groups. G20 is primer forum for international economic cooperation formed in the backdrop of financial crisis of the late 90s. Its aim was to secure global financial stability by involving middle income countries. All the BRICS countries are the members of G20. South Africa, China, India, Russia और B for Brazil. जी हाँ जी हाँ जी हाँ चलिए डी इज द राइट आंसर G20 का निर्माण 1999 में किया गया था जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 90 के दशक के अंतिम समय में जिसने ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के टाइगर इकोनॉमिक्स को प्रभावित किया था उस क्राइसिस के बाद इसकी स्थापना 99 में की गई इसका एम करना है सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
involving middle income countries. Its prominent members are Australia, Brazil, China, France, Germany, India, Japan, Republic of Korea, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, and UK, US, and European Union. Spain is the invited as a permanent guest. Consider the following statement regarding G20 groups. G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है. G20 represent the around 85% of the global GDP and two-thirds of the world population. The presidency of G20 rotates every 3 years among the members. जी नहीं, बिल्कुल गलत बता रहा है. एक और दो सही है. G20 एक प्राइमर फोरम है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था, जिसमें कि 85% जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी का योगदान है. 75% ग्लोबल ट्रेड होता है इसी के बीच, और लगभग लगभग 2/3 जनसंख्या पूरे विश्व की इसी में समा जाती है. इसका जो प्रेसिडेंसी सीप होता है ना, हर साल होता है अमोंग द मेंबर्स एंड कंट्री होल्डिंग देयर प्रेसिडेंसीज टुगेदर विद द प्रीवियस एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होल्डर फ्रॉम Trokia to ensure the country of G20 agenda. During India's presidencies, India, Indonesia, and Brazil will form the Troika. This would be the first time when the Troika would consist of three developing countries and emerging economics. पहली बार है ट्रोइका जो है, जिसमें इंडोनेशिया, ब्राज़ील और इंडिया ट्रोइका में है, और सब के सब डेवलपिंग कंट्रीज है, इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है. G20 was has no permanent secretariat. The agenda and the work are coordinated by representative of the G20 countries, जिसको कहते हैं शेरपा, who work together with the finance minister and governors of the central banks. India has announced that ex-Niti Aayog CEO Amitabh Kant would be the G20 Sherpa after Piyush Goyal.